So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about all the important 12 schedules of the Indian Constitution. Now, I hope you all are aware, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, you must have read it little bit about the schedules of the Indian Constitution. Specifically, if you see the previous year questions, we have seen some previous year questions, especially on 7th and 8th schedule, like 8th schedule contains 22 languages, 7th schedule talks about the 3 list and all. So उस पर questions आए हुए हैं previous years में. So that is why we have decided to discuss all the important 12 schedules and we will discuss the in detail about that. Okay. Now, so let us begin with today's class, and I hope you are aware. So we have just got the IIM Ahmedabad results, and here are the results in front of you. So this is the collective achievement of the entire organization, along with it's an achievement of the students and their families as well. So these are our toppers, and we are very happy to see these results and all. So जब भी अच्छा result होता है, तो the teacher also feels very good. The student also, of course, and the entire family and all. So that is what currently you can see. और नीचे भी आप देख सकते हो, है ना? So these are our actually students who have actually qualified the exam and got selected in Ahmedabad. Okay, so let's begin with today's class. तो आज हम लोग schedules of the Indian Constitution की बात करेंगे. So let us begin. How many schedules were originally there in the Indian Constitution? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर schedules होता क्या है? What is this? No problem, we will discuss. I will explain what is actually schedules. What are schedules? ठीक है? I will explain it. Nothing to worry. So let us begin with the first question. How many schedules were there originally in the Indian Constitution? When I'm saying using the word originally, we are talking about when the Constitution fully came into force. That is 26 January 1950. जब शुरू में संविधान पूरी तरह इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को, तो कितने शेड्यूल्स होते थे? Originally, how many schedules were there? So if you know the answer, please answer me in the live chat. I'll be very happy to know it. So the right answer is originally there were option A, 8 schedules were there. So later on, 4 new schedules got added, and now we are having total 12 schedules. Okay, this is today. ठीक है? Originally शुरुआत में 8 schedules होते थे, 4 बाद में ऐड किए गए over a course of time, and now currently we are having so total 12 schedules of the Indian Constitution. Okay, so let us begin. The next is this is also an additional question which is related with the same topic. How many articles were there in the Indian Constitution originally? 495, 425, 395, 435. Originally कितने articles थे Constitution में, आपको बताना है. Originally, again, we are talking, I'm saying originally, I'm saying 26 January 1950. So the answer is 395. Originally, जो है शुरुआत में 395 आर्टिकल थे, अभी currently 448 के आसपास है, 450 roughly. ठीक है? So just have an idea about it. Now the next is how many parts were there in the Indian Constitution originally? 18, 22, 25, 17. What is the right answer to this question? यानी ओरिजिनली कितने पार्ट्स होते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ओरिजिनली मतलब अगेन 26 जनवरी 1950 को. And currently how many parts are there? If you know it, please answer me. I'll be very happy to know. अगर आपको आता है तो आप आंसर करो. So the right answer actually is 22 parts were there. So C is the right answer. देखो ये आपको पता होना चाहिए. Originally when the constitution was made or came into effect, there were 395 articles, 22 parts and 8 schedule. ठीक है? Now अगर आप आज की बात करो, है ना, तो original structure था 395 articles, 22 parts, 8 schedule. Current structure 448 articles, 25 parts and 12 schedule. तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे. We will discuss this 8 schedule and like today we are having 12 schedule. So we will discuss this today. और इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ. If you see the previous year question, you'll realize it's ZAT के और CMAT के इसमें से क्वेश्चन आया है शेड्यूल से, स्पेशली 7th और 8th शेड्यूल से अक्सर क्वेश्चन आता है. ठीक है? So that is their favorite. So we'll discuss all the schedules. जहाँ जहाँ पर important होगा, wherever you will find things which are important, I will give more focus on that. Otherwise, we will discuss all the 12 schedules. ठीक है? So let us begin with the first schedule. है ना? पहले ये जान लेते हैं कि शेड्यूल होता क्या है, because I have seen people asking. ठीक है?
अब देखो, अगर इफ यू डाउनलोड एनी ऐप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अगर ऐप डाउनलोड करोगे, which you can find on Play Store, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो उसमें एक पार्ट्स होंगे, है ना? So we are having 25 parts currently, और जैसे पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, तो जैसे पार्ट 1 है तो पार्ट 1 के अंदर कुछ आर्टिकल होगा, पार्ट 2 होगा उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स होगा, देन पार्ट 3 होगा, लाइक दैट, है ना? So every part has some article, ठीक है? जैसे आर्टिकल 1 to 5 होगा इसमें, आर्टिकल 6 to 11 होगा, है ना? 12 to 35 इन पार्ट 3. सो ये सब आर्टिकल्स है, लेकिन शेड्यूल क्या होता है? कोई स्पेसिफिक आर्टिकल उसको और एक्सप्लेन डिटेल में करना हो, ठीक है? फॉर दैट वी आर हैविंग शेड्यूल. इट इज एक्चुअली प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स, क्लैरिफिकेशंस एंड स्ट्रीमलाइन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो वन ऑफ द आर्टिकल 240, 245, 246 ये सब बात करता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट की, एंड 254. These are the articles talking about the three lists. So union list, state list, concurrent list, which has power to make laws. So the union, the parliament has power to make laws in union list. The state legislature has power to make laws in state list, and both union and the state has power to make laws in concurrent list. तो अब ये सारे लिस्ट मेंशन कहाँ होंगे? तो दैट इज मेंशन इन द 7th शेड्यूल, ठीक है? The detailed description of any article or expanded definition of the article or expanded explanation of the article is mentioned in the schedules, in the 12 schedules. ठीक है? So when you keep on learning it, you will understand it, the idea behind it. ठीक है? So let us begin with the first schedule. तो first schedule of the Indian Constitution में क्या चीज mentioned है? So here is the question. The first schedule of the Indian Constitution talks about what? अगर आप Constitution का first schedule open करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा लिखा हुआ? That is the question. Allocation of seats in Lok Sabha to states, name of states in union territory, allocation of seats in Rajya Sabha to states, oath of important constitutional post holders. अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल ओपन करोगे, व्हाट विल यू गेट? If anyone knows, please. I'm very happy to know. So the right answer is name of the states and union territory. So B is the right answer to this question. So now I'll explain. I will show it. मैं आपको दिखा भी दूंगा first schedule कैसा दिखता है. But before that, since we are talking about states and union territory, please tell me this. This is very, very important. But I have seen this question being asked in different exams these days, because in the last 5-6 years, we have seen some changes in the number of states and union territory. तो अब आपको बताना है currently, यानी today, how many states and how many union territories are there in India? आज के दिन भारत में टोटल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं? 28 states, 9 union territory, 28 states, 8 union territory, 29 states, 8 union territory, 27 states, 9 union territory. What is the right answer? Anyone? I'm waiting for the response. The right answer is option B, 28 states and 8 union territories. So B is the right answer to this question. ठीक है? तो इंडिया के पास टोटल करेंटली अभी 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज. ओके, सो दीज आर द 28 स्टेट्स, और इसके कैपिटल भी आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिकॉज आई नो दैट पीपल गेट कंफ्यूज हियर कि मणिपुर कैपिटल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड. सो द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जनरली पीपल फॉरगेट द कैपिटल्स, अदरवाइज व्हेन आइडियली यू शुड बी नोइंग इट, ऑफ कोर्स, ऑल द स्टेट्स. ठीक है? आई होप यू आर अवेयर, एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, व्हिच इज करंटली अ यूनियन टेरिटरी. इट हैज बीन स्प्लिट इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी. So here यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर नहीं मिलेगा. I hope you are aware that decision was taken on 5 August 2019. And here are the 8 union territories. अब बोलोगे सर पहले 7 होता था, 2 were added, जम्मू कश्मीर and Ladakh, yes, in August 2019. But one more decision was taken, and here you can see. So the 2 different union territories, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, were merged also in 2019. ठीक है? So 7 + 2 are -1, so we are having 8 union territory. ठीक है? So currently we are having 8 union territory. Andaman and Nicobar ये पूरा एक union territory है. ठीक है? Jammu Kashmir and Ladakh are 2 separate union territories. Lakshadweep और Puducherry, government of Delhi, Chandigarh, you know these things. ठीक है? एक चीज और बताना चाहिए, the capital of Andaman and Nicobar is Port Blair. But recently we have seen the change in the name, and now the name is Sri Vijayapuram. This you should be knowing. ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है? So that is what you should be knowing. So we are having in India 28 states
and 8 union territory. This is very 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 important. वो छोटी सी बात है, लेकिन यही छोटी सी बात लोग गड़बड़ा जाते हैं एग्जाम में, ठीक है. So that is what you should be knowing about. Let's move on. हाँ, तो I was talking about first schedule, है ना. मैं बोल रहा था ना कि first schedule में states और union territories का नाम mention है detail में. So yes, so when you open the first schedule, so the first schedule it says article 1 and 4 उसके related है constitution में, so उसका explanation है यहाँ ना. So first schedule आप देखोगे the states के नाम mention आंध्र प्रदेश, असम, ये सब laws है उससे related, ये सब नहीं पढ़ना है, just have a rough idea, है ना. So they are talking about in Bihar, है ना, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh. So when you read first schedule, it mentions the name of all the 28 states and the name of all 8 union territories. ठीक है, तमिलनाडु, है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, ठीक है, just have an idea, है ना. So these are the things I've just shown it, है ना, कि आपको एक आइडिया लग जाए. फिर यूनियन टेरिटरीज में सिक्किम में नहीं, यूनियन टेरिटरी, हाँ, यूनियन टेरिटरीज आप देख सकते हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. इसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार एंड अदर यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन्ड. ओके, so you will get an idea about the first schedule. ये first schedule of the Indian Constitution में सारे states और union territory के नाम mentioned है. Now, if I want to create a new state or a union territory, which article I should be using? ठीक है. So if a new state is made, let's say मान लीजिए एक नया state बनाना है, then the parliament has to pass a law and insert a new state under first schedule. तो first schedule है, इसके अंदर एक नया नाम डालना पड़ेगा. जैसे in 2013 Andhra Pradesh was split into Andhra Pradesh and a new state called as Telangana. So the name of Telangana was added in the first schedule. This was done by Article 3 of the Indian Constitution. Article 3 Parliament कर दिए, Parliament has power to make new states. ठीक है, that is what you should be knowing. So A is the right answer. Formation of new states and alteration of areas, boundaries, or names of existing states. That is what you should be knowing. Anna. The next is, let us talk about the second schedule of the Indian Constitution. So the second schedule of the Indian Constitution talks about what? First हम लोगों ने done कर लिया. Let us talk about second schedule. Please tell me. Allocation of seats in Lok Sabha, allowances, privileges, emoluments, and of constitutional post holders. Allocation of seats in Rajya Sabha, oath of important constitutional post holders. Second schedule में आपको क्या मिलेगा इंडिया के? So when you open the second schedule of the Indian Constitution, you will see allowances, privileges, emoluments of constitutional post holders. मतलब देखो, इसको हम ऐसे नॉर्मल में क्या देते हैं, सैलरी, बट दिस इज नॉट सैलरी, दिस इज बियॉन्ड सैलरी. ठीक है, सैलरी, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स, जैसे शॉफर ड्रिवन कार मिलती है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, सब कुछ मिलता है. आई होप यू आर अवेयर. सो दिस इज मोर देन अ सैलरी, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. तो अगर आप सेकंड शेड्यूल पढ़ोगे तो इसमें बात कर रहे हैं ना, सो दे आर टॉकिंग के प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी है, गवर्नर की कितनी है. तो इस पर मत जाना, ये ओल्ड है, ये सब पुराना है. ठीक है, करंटली दिस इज नॉट द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट. 10,000 रुपीस नॉट द सैलरी. दिस इज जस्ट एन ओल्ड इमेज, जैसे आई एम शोइंग यू, है ना. तो आप जाओगे तो देख सकते हो वाइस प्रेसिडेंट की कितनी सैलरी है ना. दीज आर द थिंग्स मेंशन. Then Speaker of the House of the People and a Speaker of Legislative Assembly. What are the salaries? Supreme Court judge salaries etc. are mentioned. अच्छा, currently जो है ये केस है, देखो प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख है currently, है ना, and गवर्नर्स की 3.5 लाख, and they have to pay the tax because एक जमाने में कुछ न्यूज़ आया था कि प्रेसिडेंट की सैलरी टैक्स के बियॉन्ड होती है. ऐसा कुछ नहीं होता है. Of course everyone has to pay the tax. ठीक है. Similarly, CJI Supreme Court judge, they have this salary and all. Okay, है ना. तो जैसे आई एम जस्ट शोइंग एन इमेज फ्रॉम देयर सेकंड शेड्यूल से, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट अ रेंट ऑफ ऑफिशियल रेसिडेंस, विदाउट रेंट, है ना. तो मैंने ये टॉकिंग कि मैं अलाउंसेस क्यों कह रहा हूं, मतलब इसमें लिखा नहीं सिर्फ सैलरी नहीं, इट इज बियॉन्ड दैट, है ना. अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स, बिकॉज़ बेसिकली दे विल गेट अ बंगला आल्सो. ऑफिशियल रेसिडेंस काफी बड़ा बंगला होता है ना. इट्स नॉट एक रूम का फ्लैट नहीं होता है, इट्स अ बिग बंगला, है ना, व्हिच इज प्रोवाइडेड इन द दिल्ली. और विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, तो ये भी एक तरह का अलाउंसेस हो गया. इट्स ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ अ सैलरी, बट इट इज बियॉन्ड अ सैलरी. फिर और भी बहुत सारी चीज मिलती है, बेनिफिट्स, जैसे कार्स मिलेगी, है ना, ड्राइवर होंगे, एंड दैट डिफरेंट फैसिलिटीज एंड ऑल. दीस ऑल आर मेंशन इन सेकंड शेड्यूल, है ना. तो सेकंड शेड्यूल में किसके अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स मेंशन है? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड सीएजी के. ठीक है.
The next is third schedule. When we are talking about third schedule, what is mentioned in the third schedule of the Indian Constitution? Allocation of seats in Lok Sabha, anti-defection law, allocation of seats in Rajya Sabha, oath of important constitutional post holders. Third schedule में क्या चीज mentioned है? Anyone? So the third schedule talks about oath of important constitutional post holders. D is the right answer. ठीक है, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, देखो इसी से आप समझ लोगे शेड्यूल का क्या मतलब होता है. बिकॉज व्हेन यू रीड एन आर्टिकल, आर्टिकल जैसे आर्टिकल 52, 53, 54 ये सब प्रेसिडेंट से रिलेटेड है ना, कि प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सब कुछ एक्सेट्रा. फिर आता है कि प्रेसिडेंट शुड टेक द ओथ. ओथ मेंशन कहाँ है? तो ओथ इज मेंशन्ड हियर इन थर्ड शेड्यूल, है ना, लाइक दैट. तो यही बात है ना. तो यू कैन सी, तो जैसे यूनियन मिनिस्टर हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, यूनियन मिनिस्टर हुए, सुप्रीम कोर्ट जज हुए, प्रेसिडेंट का शायद शेड्यूल थर्ड शेड्यूल में नहीं मेंशन है, बट अदर्स बाकी सबका मेंशन है. ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीएजी, तो कहाँ मेंशन है? सो ऑल दीज आर मेंशन इन थर्ड शेड्यूल. ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ. So these are the people whose oaths are mentioned: Union Minister, State Minister, MP, MLA, member of legislative state legislatures, यानी MLA, MLC का, then Supreme Court judges, High Court judges, CAG, etc. अब देखो यहाँ है थर्ड शेड्यूल, ओपन करोगे तो लिखा क्या है? Oath for the minister for the union. If you want to become a minister in the union and you have been elected, or I mean you have been elected as MP or MLA, and then you have been selected as a minister also, तो आपको ओथ लेना पड़ता है. तो ये ओथ IAB, AB मतलब आपका नाम है ना, like whatever is your name, do swear in the name of God, है ना. अगर आप बिलीव करते, if you believe in the God, then it is. If you are atheist, then you will read this: do solemnly affirm that I will bear. यानी जो गॉड पे नहीं बिलीव करते वो नीचे वाला पढ़ेंगे, that I will bear true faith and allegiance to the constitution, है ना, ये सब पढ़ना होता है. ठीक है, similarly oath of secrecy भी लेना होता है कि I am a minister, because if you are becoming a minister you get a lot of secret information and you have to keep it secret. You cannot reveal it even if you have left the post. अगर आप मंत्री नहीं भी रहे, आपने छोड़ दिया पोस्ट, तो भी आपको बहुत सारी चीज सीक्रेट है वो हमेशा के लिए सीक्रेट रखनी होती है. So for that you take the oath. That is mentioned in third schedule. ठीक है. Similarly, if you want to fight for an election of a parliament, still you have to take an oath of I will bear true faith and allegiance to the constitution, है ना. So these are the things. Similarly, if you want to become a CAG or a Supreme Court judge, तो उसके लिए भी oath लेना पड़ता है ना. I will uphold the constitution, है ना. So these are the things. I will duly perform my duties, etc. ठीक है. Without fear or favor, I will uphold the constitution. ये सब आपको ओथ लेना पड़ता है ना. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा एटलीस्ट. सो दीज आर द ओथ्स दैट आर मेंशन्ड इन थर्ड शेड्यूल. ठीक है ना. ये सब आप देख सकते हो. आई हैव जस्ट अटैच्ड इट टू गेट एन आइडिया अबाउट इट. द नेक्स्ट इज, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ शेड्यूल. सो द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट व्हाट? allocation of seats in Lok Sabha to states, anti-defection law, allocation of seats in Rajya Sabha to states, oath of important constitution post holder. फोर्थ शेड्यूल में आपको क्या मिलेगा? Please tell me. When you open the fourth schedule of the Indian Constitution, you will get what? तो ये तो मैंने बता दिया थर्ड शेड्यूल में. तो the answer is allocation of seats in Rajya Sabha to states. ठीक है, C is the right answer. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब ये कि राज्यसभा की, तो आंध्र प्रदेश में से 18 राज्यसभा MP आते हैं, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बिहार से 16 एंड असम से 7, लाइक केरला से वी आर हैविंग 9, है ना. कुछ भी ऐसे देख लो, ओडिशा से 10 राज्यसभा MPs. काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा होता है. so, कौन से स्टेट से कितने राज्यसभा MP आते हैं, है ना. which state has how much representation of in राज्यसभा, that is what is mentioned in fourth schedule of the Indian Constitution. ठीक है, so C is the right answer to this question. है ना, आप देख सकते हो. जैसे दिल्ली से 3 आते हैं राज्यसभा से, and Puducherry is also union territory. यहाँ भी एक राज्यसभा MP है, 1 राज्यसभा MP is there in Puducherry also. ठीक है. The next is fifth schedule of the Indian Constitution. तो अब fifth schedule की बात करते हैं. The fifth schedule of the Indian Constitution talks about what? Allocation of seats in Lok Sabha to states, anti-defection law, governance in tribal areas और पंचायत. फिफ्थ शेड्यूल क्या से रिलेटेड बात करते हैं? प्लीज टेल मी. तो आपके लिए, इफ यू आर एन MBA स्टूडेंट, 7th और 8th शेड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू.
We will discuss 7th and 8th schedule because we have seen a lot of questions from that. Okay. 5th schedule, देखो एक चीज बताओ, 5th and 6th schedule जो है ना, both these schedules talks about governance in tribal areas. ठीक है, तो एक होता है 5th schedule, एक होता है 6th schedule. So 6th schedule actually deals with tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. ठीक है, and 5th schedule deals with other tribal areas, means tribal areas in other states. ठीक है, दोनों ट्राइबल एरिया से डील करता है, बट 6th शेड्यूल में ज्यादा पावर होता है, मोर ऑटोनॉमी, मोर पावर्स टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. जो लोकल कम्युनिटी है उसके पास बहुत ज्यादा पावर होता है 6th शेड्यूल में. ओके, 5th शेड्यूल में some of the powers are given to the tribal areas, but still as compared to 6th schedule, the powers given to the local community or the local population is comparatively lesser. ठीक है, so ये दोनों both deals with the governance in tribal areas. ठीक है, आपने सुना होगा जैसे हाँ देखो 5th शेड्यूल में लिखा ना, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल वगैरह होती है एक्सेट्रा, गवर्नेंस इन ट्राइबल एरियाज. ठीक है, इतना डिटेल नहीं जाना आपको, मैंने जस्ट शो कर दिया है ना. और अभी रिसेंटली एक स्टेट में डिमांड हो रही थी 6th शेड्यूल इंप्लीमेंट करने की. अच्छा पहले इसका आंसर बताओ. फर्स्ट टेल मी दिस. आई हैव जस्ट टोल्ड यू, सो आई बिलीव दैट यू शुड बी नोइंग. Which of the following are not governed under 6th schedule? अभी मैंने बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. So what is not? The right answer is option A. Jharkhand is the right answer to this question. Jharkhand इसमें नहीं आता है ना, मैंने को बताया. So these are the 4 states: Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, 6th schedule के अंदर, which are actually mentioned in which are actually governed under this, है ना. So that is what you should know. और बाकी rest of the tribal areas है 5th schedule के अंदर governed होते हैं. But you know 6th schedule has actually given more power to the local areas or local you can say district councils or tribes. ठीक है, उनको ज्यादा पावर दिया हुआ है. इसलिए I'm sure you must have heard it in the last 1 or 2 years. It was very much in the news that Ladakh was also demanding 6th schedule. कि हम लोग को भी इस तरह से autonomous district council 6th schedule दिया जाए, so that locals should get locals in participation in governance should be more, है ना. ताकि ट्राइब्स और लोकल ट्राइब्स को ज्यादा पावर होगा गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस रिलेटेड. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड दिस वेरी मच कमिंग इन द न्यूज़, इसलिए आपको पता होना चाहिए. इनफैक्ट आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्च इट. वी आर हैविंग अ लॉ एंट्रेंस चैनल वेयर आई हैड मेड दिस वीडियो. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम, मिस्टर सोनम वांगचुक. इन पर है ना 3 इडियट्स फिल्म बनी है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. Now, let's move on to the next one, the 7th schedule. Very, 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 very important because I have seen questions in MBA exams from 7th schedule, and that is what you should know. So the 7th schedule of the Indian Constitution deals with what? Languages, 3 list, anti-defection law, anti-profiteering law. What is the right answer? सेवेंथ शेड्यूल में क्या मेंशन है? If you know it, please tell me. I'm waiting for the response. So the right answer is B, 3 list: union list, state list, and concurrent list. So in union list, only the union, that is the parliament, can make laws, है ना. In state list, the state legislature can make laws, है ना, जैसे legislative assembly वगैरह होता है ना. And in concurrent list, both can make laws, है ना. So these are mentioned, ये सब बात mentioned है article 246 में, है ना, which I have told you, है ना, कि under union list parliament can make laws, under state list state legislature can make laws, and concurrent list both can make laws. ये सब mention यहाँ है ना. 246 if you read, it talks about it, है ना. The parliament has exclusive power, etc. and all. लेकिन अब mention कहाँ होगा? What are those union list? That is mentioned in 7th schedule की. What are the items that are mentioned in union list? That is the question, है ना. तो अगर आप देखोगे तो यूनियन लिस्ट है, उसमें 7th शेड्यूल में पढ़ोगे तो लिखा जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया. दिस इज प्योरली अंडर यूनियन लिस्ट, है ना. मिलिट्री से रिलेटेड, ऑफ कोर्स ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर एज फार एज आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस इज कंसर्न्ड. नेवल, मिलिट्री, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है ना. डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस,
ठीक है, naval, military, firearms, atomic energy, CBI, preventive detention related with defense, foreign affairs, ठीक है. Then diplomacy है ना, foreign affairs, international, United Nations interaction, war, peace, citizenship, naturalization, extradition, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है ना. Pilgrimage to places outside India, है ना, railways, shipping, navigation, lighthouses, maritime shipping, ये सब पता होगा ना, quarantine of hospitals, etc. है ना, these are the things you should be knowing about. ठीक है. Then state list में क्या होगा? This is also mentioned in 7th schedule, है ना. Public order, policing, public order तो policing वगैरह in general, है ना. Then we have police, है ना, officers of the servants of the high courts, prisons related जितनी भी चीज, jails वगैरह, सब state list में आता है ना. Then public health, sanitation, pilgrimages, intoxicating liquors को ban करना, control करना, regulate करना, burial grounds, कब्रिस्तान वगैरह, cremation grounds, ये सब state list के अंदर में आता है. Library, museum, and communications, roads, bridges, ferries, these are actually governance regarding local governance. Of course, these all are regulated by state governments, है ना. So state list is there. Concurrent list where both can make laws, है ना. जैसे criminal laws, जैसे CRPC, I'm sure you must have heard. अब तो ये नहीं होता, अब BNSS होता है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, है ना. Preventive detention laws, है ना, concerned with security of state, marriage, divorce, ये सब concurrent list, both parliament and the state can make laws, है ना. Then transfer of property other than agricultural land, है ना. These are the things I'm sure you must be aware. ठीक है. तो यूनियन लिस्ट में लगभग 100 आइटम्स आ देयर, स्टेट लिस्ट में 61 के आसपास है, और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स आ देयर. ऑल आर मेंशन्ड इन 7th शेड्यूल. ठीक है. दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. और जस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग, देयर वर सम आइटम्स व्हिच वर देयर इन स्टेट लिस्ट, बट बाय 42nd amendment 1976 द पार्लियामेंट मूव्ड इट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट. तो पहले सिर्फ स्टेट का पावर था लॉ बनाने का, दोनों बना सकती है, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट कैन मेक लॉज. उसमें क्या क्या, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सो दीज आर एक्चुअली वेयर बोथ नाउ बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉज. ठीक है. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 8th शेड्यूल, व्हिच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉक्स अबाउट व्हाट? लैंग्वेजेस, 3 लिस्ट, anti-defection law, anti-profiteering law. What is the right answer? बताओ. Basically, it mentions all the languages. ठीक है. So originally, when the constitution was formed on 26 January 1950, there were 14 languages, है ना. And today, how many languages are there? 22 languages, है ना. So it kept on adding, है ना. तो originally 14 languages थी. Okay. So ये amendments पूछा हुआ है in a previous year question of some MBA exam. This amendment was asked. That is why I'm showing. पूछे जैसे for example 21st amendment 1967 में हुआ, it added Sindhi language in the 8th schedule. Then 71st amendment हुआ, it added 3 more languages, कोंकणी, मणिपुरी and नेपाली. ठीक है. कोंकणी गोवा वगैरह में बोला जाता है, गोवा, वेस्ट कर्नाटक वगैरह में. So मणिपुरी and नेपाली you should be knowing. Nepali is actually बिहार यूपी के बॉर्डर में, है ना. नेपाली languages is there. Then 92nd amendment, 4 new languages were added. Bodo you will find it in Assam, Dogri in Jammu and Kashmir, Santhali in Jharkhand and Odisha region, Santhal, and Maithili in Bihar. ठीक है. So these 4 languages were added. Then in 96th amendment, the spelling of Odia was renamed as Odia, like this. So ये amendments पूछा हुआ है. This was asked. These were amendments were asked in the previous year question. So of course they can ask it again. ठीक है. So these are the 22 languages. अब देखो आपको 22 कैसे याद होगा? अगर मान लो पूछ दे which of the following is not the language mentioned in 8th schedule, तो कैसे आंसर करोगे? पहली बात तो all these 22 languages are Indian origin language. इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पर ये पैदा हुआ है. All these 22 languages are born in Indian subcontinent. This would be helpful in eliminating options. जैसे अगर आपको दे दिए जाए 4 ऑप्शन, which of them is not mentioned in 8th schedule, और एक ऑप्शन दे दे इंग्लिश, दूसरा ऑप्शन दे दे उर्दू, तीसरा ऑप्शन दे दे नेपाली, and चौथा ऑप्शन दे दे बोडो. So which one of them is not mentioned in 8th schedule? So the answer is option A, English, because English is not born in Indian subcontinent.
It is born in England. Now you'll be thinking Urdu. So Urdu is of course an Indian language. It was born. Abhi recently एक Supreme Court का judgment दिया है that Urdu is actually born in India only. This language. Okay, that is what you should know. Then Nepali, of course, because Indian subcontinent का part माना था Nepal and that region. But of course, there are people speakers who are in Bihar and UP region also. ठीक है. Bodo, of course, in Assam. So Bodo language is there, which was added. That is what you should know. And Nepali we have discussed. So that is how you should know. इसमें इस 22 language में English नहीं होगा because English is not an Indian language, Indian origin language. ठीक है. Whereas other languages can be there which are made in India, ना. So that is what you should know. तो ये सब पूछते हैं कि कौन सा नहीं है, which of them is not. So you have to apply some logic. Now, like for example, Sindhi, you will say कि sir Sindh तो पाकिस्तान में. But please understand, I have used the word Indian subcontinent. इसीलिए तो, because originally India, Pakistan, Bangladesh were part of the same Indian subcontinent. ठीक है? तो बस आप ख्याल रखिएगा. Konkan is in Goa region of that, है ना? Kannada is in actually Karnataka region and all. So ये आपको rough idea होना चाहिए. That is how you can remember. The next is 9th schedule of the Indian Constitution. So the 9th schedule of the Indian Constitution was added. हमने बताया 8th schedule तक originally mentioned था. The 9th, 10th, 11th, and 12th schedule were added later on. Okay. So 9th schedule was added by first amendment, first constitutional amendment, 1951. Okay. Just have an idea. Or these are the laws that were there in the 9th schedule. इसमें ये था कि so that if any law is put under it, then it cannot be challenged in judiciary. So basically, जो originally बनाया गया था, originally when 9th schedule was made, it was made with an intention, and yes, Article 31 capital B was inserted to ensure that the laws which are put under 9th schedule should not be challenged in the court. ठीक इस तरह से बनाया गया था. Just have an idea, rough idea. But now it has been diluted, तो इसको आपको इतना detail नहीं जाना है. So I'm not going in that detail because आपके लिए उतना important नहीं. Then 10th schedule is very important. This deals with anti-defection law. This is important. First of all, we have to understand what is defection. Defection क्या होता है ये हम लोगों को समझना जरूरी है. ठीक है. अब आप इस तरह समझ लो. For example, there is a person called X. He joined a political party A party. Okay, he gets a ticket. He fights an election, and this guy becomes an MLA. And once he has become an MLA, he joins another political party. Let's say Q party. Now this is unethical. This is called as horse trading. मतलब आप पहले MP या MLA बन के किसी और पार्टी से आप बनने के बाद कहीं और चले जा रहे हो. ये unethical है ना. So this is called as horse trading में पैसा involved होता था, money involved होता था. This is called as defection, है ना. And if the money is involved in that, if a bribery is there, then it is called as horse trading. इसको stop करने के लिए this law was brought, the 10th schedule. Article 102 and 191 already talks about it, but specifically 10th schedule में detail में बात है disqualification on ground of defection. So if you become an MP or MLA from a political party, particular political party, and after becoming MP or MLA, you are joining some other political party, then you will lose the seat, है ना? Because this is defection. इसीलिए disqualify कर दिए जाओगे आप if you do that. So the entire detail about that is mentioned in 10th schedule. Okay. So basically 10th schedule is all about anti-defection law. ऐसे याद रखना. Anti-defection law. That is what you should know. The next one is 11th and 12th schedule. So the 11th schedule was added by 73rd constitutional amendment. And 12th schedule was added by 74th constitutional amendment. ठीक है. So 73rd constitution ये सब वही 1992, 93 के आसपास हुआ था. So this deals with पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. है ना. जैसे लोकल एरियाज में होते हैं ना, ग्राम सभा, पंचायत. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट. एंड 74th amendment deals with ULB, urban local bodies. Urban local bodies. Like for example, we are having urban local bodies में like we are having mayor, municipal corporation, municipal. These are the things in there, है ना. Ward councillor, etc. ठीक है, that is what you should know. So 11th schedule is related with panchayats, है ना.
So these are the items related with that. This agriculture ho gaya, land improvements, minor irrigation, fisheries, animal husbandry, minor forest, produce, khadi, village cottage industry, rural housing, drinking, fuel, fodder. So these are the list under which the panchayats can operate, provided the state government makes laws regarding it. अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाए और डिसेंट्रलाइज किया पावर, तो पंचायत के पास ये सब पावर आ सकती है, ठीक है. सिमिलरली है ना, द 12th शेड्यूल व्हिच इज एक्चुअली रिलेटेड विद अर्बन लोकल बॉडीज, है ना, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटीज के पास जो पावर होता है ना, अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड, रोड्स, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, फायर सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, है ना, safeguarding interests of weaker section. So these are the points mentioned for that. अब वो सब रखना नहीं है, बट एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए. So the rough idea I have actually given to you all. ठीक है. अब मैंने ओरिजिनली बता दिया we are having 8 schedules. So 9, 10, 11 and 12 were added later on. So 9th schedule was added by first amendment. 10th schedule was added in 1985 by 52nd amendment. 11th and 12th schedule. So 11th schedule was added by 73rd amendment, and 12th schedule was added by 74th amendment. That is what you should be doing. So this is all about today's class. Yes, one more thing. So these are our achievers. So congratulations to all. This is all about today's class. Thank you, everyone. Thanks for watching. Have a nice day.